students, welcome to Modern English Book 4, lesson number 7, page number 73 to 74. Today we are going to read unit number 7 and the name of the lesson is The Emperor and the Seed. Dear students, this story is about an emperor and we get many information after the reading of this story. Now let's start the reading. An emperor in the far east was growing old and knew it was time to choose his successor. मशरिक में एक शहंशाह बूढ़ा हो रहा था और जानता था कि अब उसके जानशीन के इंतखाब करने का वक्त आ गया है. Instead of choosing one of his assistant or his children, he decided something different. अपने बच्चों में से और अपने मामन में से किसी को मुंतखब करने की बजाय उसने एक मुख्तलिफ फैसला किया था. He called young people in the kingdom together one day. उसने ममलकत में से नौजवानों को एक दिन बुलाया. He said, उसने कहा, it is time for me to step down and choose the next emperor. वक्त आ गया है कि मैं अपना ओहदा छोड़ दूं और अगला जानशी मुंतखब करूं. I have decided to choose one of you. मैंने तुम में से किसी को मुंतखब करने का फैसला किया है. The kids were shocked. बच्चे चूम गए. But the emperor continued. लेकिन शहंशाह जारी रहा. I am going to give each one of you a special seed today. मैं आज तुम सबको एक ख़ास बीज देने जा रहा हूँ. I want you to plant the seed, water it, and come back here 1 year from today with what you have grown from this one seed. मैं चाहता हूँ कि तुम इस बीज से एक पौधा उगाओ और उसे पानी दो और 1 साल के बाद सब यहाँ आओ और आज से तुमने इस बीज से क्या उगाया है. I will then judge the plant that you bring and the one I choose will be the next emperor. मैं देखूंगा कि तुमने इस पौधे से क्या उगाया है जो तुम लाए हो और फिर मैं तुम में से किसी को शहंशाह मुंतखब करूंगा. One boy named Link was there that day and he, like the other, received a seed. उस दिन लिंग नाम का एक लड़का वहाँ था. उसे भी दूसरों की तरह एक बीज मिला. He went home and excitedly told his mother the story. वो घर गया और उसने पुरजोश अंदाज में अपनी माँ को कहानी सुनाई. She helped him get a pot and planting soil and he planted the seed and watered it carefully. उसकी माँ ने उसकी बर्तन और पौधे के लिए मिट्टी लाने में उसकी मदद की. उसने बीज बोया और उसे पानी पिलाया. Every day he would water it and watch to see if it had grown. हर रोज उसे पानी पिलाता और देखने के लिए आता कि ये बढ़ गया है. After about 3 weeks, some of the other youth began to talk about their seeds and the plants that were beginning to grow. तकरीबन 3 हफ्ते के बाद दूसरे नौजवानों ने इसके बारे में बात शुरू कर दी. इनके बीज और पौधे जो उगने लगे थे. Link kept checking his seed but nothing ever grew. लिंक अपने बीज को चेक करता रहा लेकिन कुछ भी नहीं बढ़ा. 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks went by. 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते गुजर गए. Still nothing. अब तक कुछ भी नहीं था. By no others were talking about their plants, but Link did not have a plant and he felt like a failure.
اب تک دوسرے اپنے پودوں کے بارے میں بات کر رہے تھے لیکن لنک کے پاس کوئی پودا نہیں تھا. اسے ایسا لگتا تھا کہ وہ ناکام ہو گیا ہے. 6 months went by still nothing in link pots. 6 مہینے گزر گئے لیکن لنک کے برتن میں ابھی تک کچھ نہیں ہوا. He just knew he had killed his seed. وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس نے بیج کو مار ڈالا ہے. Everyone else had trees and tall plants, but he had nothing. باقی سب کے پاس درخت اور لمبے پودے تھے لیکن اس کے پاس کچھ نہیں تھا. Link did not say anyone to his friend, however. لنک نے کچھ بھی نہیں کہا اپنے دوستوں کے لیے. He just kept waiting for his seed to grow. وہ بس اپنے بیج کے اگنے کا انتظار کرتا رہا. A finally year went by and all the youths of kingdom brought their plants to the emperor for inspection. بالآخر ایک سال گزر گیا اور بادشاہ کے پاس نوجوان اپنے پودے معائنے کے لیے لے آئے. Link told his mother that he was not going to take an empty pot. لنک نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ خالی برتن لے کر نہیں جائے گا. But honest about what happened. But honest about what happened. لیکن ایمانداری جو بھی ہوا. Link felt sick to his stomach, but he knew his mother was right. لنک کو اپنے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ٹھیک تھی. He took his empty pot to the palace. وہ اپنا خالی برتن لے کر محل میں چلا گیا. When Link arrived, جب لنک وہاں پہنچا, he was amazed at the variety of plants grown by the other youth. تو وہ دوسرے نوجوانوں کی طرف سے اگائے گئے پودوں کی اقسام کو دیکھ کر حیران رہ گیا. They were beautiful in all shapes and sizes. وہ خوبصورت تھے تمام شکلوں اور سائز میں تھے. Link put his empty pot on the floor and many of other kinds laughed at him. Link نے اپنا خالی برتن فرش پر رکھ دیا اور بہت سے دوسرے لوگ اس پر ہنس پڑے. A few felt sorry for him and just said, "Hi, nice try." کچھ لوگوں نے اس پر افسوس کا اظہار کیا اور صرف اتنا کہا, ارے بھئی اچھی کوشش. When the emperor arrived, he surveyed the room and greeted the young people. جب شہنشاہ پہنچا اور اس نے کمرے کا جائزہ لیا اور اس نے نوجوانوں کو مبارکباد دی. Link just tried to hide in the back. Link پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا. My what great plants, trees and flowers you have grown, said emperor. اس نے کہا, کیا تم نے اچھے پودے, درخت اور پھول اگائے ہیں. شہنشاہ نے کہا, Today one of you will be appointed the next emperor. آج تم میں سے کوئی اگلا شہنشاہ منتخب ہوگا. All of a sudden, the emperor spotted Link at the back of the room with his empty pot.
अचानक शहनशाह ने लिंग को कमरे के पिछले हिस्से में अपना खाली बर्तन के साथ देखा। He ordered his guard to bring him to the front. Ling was terrified. उसने अपने मुहावजों को हुक्म दिया कि वो इसे सामने लेकर आए। लिंग घबरा गया। When Ling got to the front, the emperor asked his name. जब लिंग उसके सामने गया, शहनशाह के सामने, तो शहनशाह ने उसे उसका नाम पूछा। My name is Ling. मेरा नाम लिंग है. He replied. उसने जवाब दिया। All the kids were laughing and making fun of him. सब बच्चे हंस रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। The emperor asked everyone to quiet down. शहनशाह ने सबको खामोश होने को कहा। He looked at Ling. उसने लिंग की तरफ देखा and then announced to the crowd और हजूम को बताया Behold your new emperor. Behold your new emperor. देखो तुम्हारा नया शहनशाह। His name is Ling. इसका नेम लिंग है। Ling could not believe it. लिंग इस पर यकीन नहीं कर रहा था। Ling could not even grow his seed. लिंग अपना बीज भी नहीं बढ़ा सका था। How could he be the new emperor? ये कैसे हो सकता है नया शहनशाह? Then the emperor said. फिर शहनशाह ने कहा 1 year ago today. 1 साल पहले आज के दिन I gave everyone here a seed. मैंने यहाँ सबको एक बीज दिया था। I told you to take the seed, plant it, water it and bring it back to me today. मैंने सबसे कहा था कि इस बीज को उगाओ, इसे पानी दो और फिर इसको आज के दिन मेरे पास लेके आओ। बट आई गेव यू ऑल बॉइल्ड सीड विच वुड नॉट ग्रो। लेकिन मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए थे जो उग नहीं सकते थे। ऑल ऑफ यू एक्सेप्ट लिंग हैव ब्रॉट मी ट्रीज एंड प्लांट्स एंड फ्लावर्स। लिंग के अलावा आप सब ने मुझे पौधे, फूल और दरख्त ला दिए हैं। When you found that the seed would not grow, जब आपने देखा कि आपका बीज नहीं उग रहा, you substituted another seed for the one gave you. तो आप सब ने उस बीज की जगह दूसरा बीज लगाया जो मैंने आपको दिया था। Ling was the only one with the courage and honesty to bring me a pot with my seed in it. Ling एक वो पहला इंसान है, वो ख़ास इंसान है जो अपने बर्तन में वही बीज लेकर आया ईमानदारी के साथ जो मैंने उसे दिया। Therefore he is the one who will be the new emperor. इसी वजह से एम्पायर जो है वो नया शहनशाह है। The prophet thought truthfulness leads to rightness and righteousness leads to paradise. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। And a man keep on telling the truth until he becomes a truthful person. और आदमी सच बोलता रहता है यहाँ तक कि वो सच्चा हो जाता है। Falsehood leads to al-fujur and al-fujur leads to the hell fire, and a man may keep on telling lies till he is written before Allah a liar.
جھوٹ الفجور یعنی بدی برائی کی طرف لے جاتی ہے، برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے نزدیک جھوٹا ہو جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔